आज हमारा सबक है यहाँ से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वलियौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद। क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शुहूद। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद। हल अताक हदीसुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़स्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा वयन्क़लिबु इला अहलिही मसरूरा। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिह फ़सौफ़ यदअू सुबूरा वयस्ला सईरा इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़ा इत्तसक़ लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ फ़मा लहुम ला युमिनून वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार पॉज करना है, रोकना है और आपको समझना है कि कहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप
پہلے قاعدے والے ویڈیوز ضرور دیکھیے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیجیے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ قرآن پاک میں ٹوٹل 14 یعنی 14 سجدے ہیں، یعنی 14 آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھنے پر آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ان سجدوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر سائیڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ، اور آیت کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ۔ تو یہ تین اس کی پہچان ہے۔ پہلی کہ حروف کے اوپر ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے، آیت کے اوپر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور پیج میں بھی سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ ہے۔ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ آپ کو ایک سجدہ کرنا ہوگا جیسے کہ نماز میں کرتے ہیں، آپ کو بیٹھنا ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے اور بیٹھ جائیں گے، سجدہ ہو گیا۔